Hello everyone, a very good afternoon to all of you. This is Ashwin Ramani here, research analyst at SBI Securities. I hope I'm audible and I hope you are able to see my screen. If you all can give me a heads up in the chat box. अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो. So that I know you all are with me live in the session. Chandrasekhar ji, good afternoon. Kumbarvel ji, good afternoon to you as well. Sanjil ji, good afternoon. Great. We'll just wait for a couple of minutes. I see that people are joining in. Audible and visible. Okay, great. Sachin ji, hello. Good afternoon. I think आपका सेटअप आज काफी सारे स्टॉक्स में दिख रहा है. Cummins India, Larsen and Toubro, divergence and trend line breakdown. Sridhar ji, hi, good afternoon. Shubham ji, good afternoon. Sunesh ji, good afternoon to you as well. I hope you all had a great weekend. The markets obviously didn't start on a good note. We are still weak, but at least we can see some recovery in the markets now. That is primarily because अभी recently एक news आया है that the next call with the US on the trade is going to be tomorrow. So I think that has lifted the sentiment on the street. And that is the reason why we could see a big jump in Nifty from the intraday lows here. So that is the major overhang. I think India-US ka trade deal is something that the market is keenly looking at. And the fact that now the trade call is going to happen tomorrow. It's only the call. It's not that it's going, the deal is not going to be announced tomorrow. बस एक call होने वाला है कल. तो उसने I think Nifty almost काफी negative था. अब almost हम 24,500 के नीचे जा चुके थे. I think we have gone about 25,674. That is where Nifty is trading at currently. So nevertheless, शुरू करते हैं आज का बेड मार्केट सेशन. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट्स अपडेट के बारे में. So Dow closed 0.48% higher. Nasdaq भी 0.8% ऊपर क्लोज हुआ. S&P 500 also closed 0.65% higher. So US markets, had a good closing on Friday. US markets अगर आप देखोगे S&P 500, Dow Jones almost all time highs के आसपास ही ट्रेड कर रहा है. Dow futures देखे, that is down around 0.4%. So we can expect a slight flat to negative start to the US markets today. Again, there were some developments in US. So US has kind of warned Cuba. US has also, warned, they've been preparing their military to invade Greenland as well. So there are like a couple of geopolitical developments happening in the US. So हमें देखना पड़ेगा how that pans out. If you look at European markets, Germany 0.53% ऊपर close हुआ, London 0.8% ऊपर close हुआ, and France closed 1.4% higher. So अगर आप देखोगे, Europe markets had a pretty good outing on Friday. Almost all the three indices closed in the green. Euro Stoxx index was down around 10 points. But if you look at the Asian markets, Nifty has recovered. It has come in the green now. Hang Seng is up 1.12%. Nikkei is up 1.6%. China is up around 1%. Kospi again almost 0.8% ऊपर है. Nifty has kind of recovered from the lows. We are at 25,700 now. Almost एक 200-250 points का recovery हमने देखा है from the lows. Sensex, I think we'll have to look at the Sensex figures because यहाँ पे delayed figures दिख रहा है. So I think there is a good recovery that we are seeing both in Nifty and Sensex at the current juncture. Nifty is still the worst performing index. अगर हम पिछले एक महीने की बात करें यहाँ पे, Nifty is down around 1%, while the best performing index continues to be Kospi, followed by China and Nikkei. So abhi bhi other Asian markets are doing relatively better than the Indian markets at the current juncture. If you look at the macro indicators, so dollar index में almost हमने देखा कि एक strong pullback देखने को मिला था dollar index में. अगर हम देखेंगे 12 जनवरी को अभी 0.25% नीचे है, बट ये पुलबैक अगर सस्टेन करता है, बट आई फील जब तक हम 100 के नीचे डॉलर इंडेक्स में, अंटिल दैट टाइम देयर इज नो मेजर साइंस टू वरी. बट अगर हम 100 के ऊपर जाते हैं तो हो सकता है इमर्जिंग मार्केट्स जैसे हमारे मार्केट्स है उसमें थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है.
If you look at dollar by rupee, again, dollar has strengthened almost 0.39% ऊपर था. We are still above the 90 mark. जैसे हम बोलते आ रहे, we want dollar to be below the 87, 88 levels, because जब तक ये 90, 91 तक आता है, तब तक FIIs भी शायद हमारे मार्केट्स में ना आए, बिकॉज अगर डॉलर अप्रिशिएट होता है रुपी के अगेंस्ट, FIIs जो पैसा लगाते, they kind of lose value on their investments. So we want dollar to go down. I think this is again a major indicator to look at. If you look at US government bonds 10-year yield, so again US में दूसरा एक problem चल रहा है between Federal Chair Jerome Powell and the US President Donald Trump. So I think Powell, he's retiring in May 2026 if I'm not wrong, and there's a new Federal Chair who's going to come in. So जो नया जो Federal Chairman आएगा, उनसे ये उम्मीद है कि वो और rate cuts करेंगे US में जाके. तो आई थिंक अगर हम यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स 10-year yields देखें तो इट्स रफली फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है. ऑन दी अपसाइड 4.2 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ 4.09% एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. अगर हम इंडियन yields भी देखें, सो इंडियन yields हैव ऑलमोस्ट अराउंड 6.6% मार्क में है. हम ऑलमोस्ट 6.7 पहुंच गए थे, फिर 6.5 से एक रीटेस्ट मिला था, और वहां से हम फिर से अब 6.6% की और सेटल हुए हैं. जापानीज बॉन्ड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बाकी सारे मार्केट्स आप देखोगे, यूएस इंडिया में एक उम्मीद है कि रेट कट्स होंगे, बट अगेन जापानीज मार्केट्स अगर हम देखेंगे तो हाई चांसेस आर दैट वहाँ पे रेट्स बढ़ने की काफी हाई प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज जापान इज ऑल्सो फाइटिंग लो इन्फ्लेशन फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. Harish ji saying market recovery from the lows. Yes, I think there was one latest news आया था that India and US are going to have a call on the trade tomorrow. So I think that is the reason why the markets have reacted from the lows here. अगर हम क्रूड की बात करें, सो क्रूड में भी थोड़ा सा बढ़ोतरी देखी गई है. पिछले 2 दिन से क्रूड 3.8% ऊपर था, अभी 0.5% ऊपर है. बट अगर क्रूड जब तक $65-66 अ बैरल के नीचे है, तब तक ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री अभी भी हम ब्रेंट क्रूड का देखें तो डाउन ही है. बट अगर हम 64-65 के ऊपर जाते हैं तो हो सकता है जो तेल के भाव है वो भी शायद बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में. विक्स अगेन हमने यूजुअली एक ट्रेंड देखा गया है विक्स का, कि जब बजट के पहले एक महीना पहले आप एक हफ्ते देखो, विक्स में यूजुअली बढ़ोतरी देखी जाती है. बजट डे के दिन वॉल्टिलिटी आपका कूल ऑफ होता है, और बजट के एक हफ्ते बाद भी वॉल्टिलिटी नीचे गिरता है. बट अगर हम बजट के एक महीना पहले देखो तो यूजुअली आप पिछले 15 साल के अगर आप बजट देखो, फाइनल और इंटरिम, मैं जल्दी आपके साथ बजट का डेटा भी शेयर करूंगा कि कौन से सेक्टर्स फोकस में रहते हैं, निफ्टी सेंसेक्स का क्या परफॉर्मेंस रहता है, मिड कैप स्मॉल कैप का क्या परफॉर्मेंस रहता है. विल बी सून बी डिस्कसिंग दैट एज वेल. तो अगर हम इंडिया विक्स देखें, सो दैट इज ऑन अ राइजिंग मोड, आज ऑलमोस्ट 7% ऊपर है, बिकॉज मार्केट्स में थोड़ा सा वो एक काफी हाई स्पेकुलेशन, हाई फियर काफी अब बढ़ चुका है. फियर अगेन विद द जियोपॉलिटिकल टेंशंस, बट आई थिंक इट्स गॉन टू ऑलमोस्ट 12 लेवल्स नाउ. बट अगर हम और ऊपर जाते हैं 12 से, तो हो सकता है शायद हमें शॉर्ट टर्म में 13.8, 14 लेवल्स तक विक्स जाते हुए नजर आए. इफ यू लुक एट द इंडिकेटर्स, सो अगेन अगर आप देखोगे गोल्ड एंड सिल्वर पे फिर से बाइंग आई है. अगर हम गोल्ड देखें, सो गोल्ड इज नियरिंग द $4,600 एन आउंस मार्क. सो आई थिंक एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट डेफिनेटली आया है गोल्ड में. अगेन इसका ट्रेजेक्ट्री अगर हम देखेंगे पॉजिटिव है. $4,400 एन आउंस इज वेयर द सपोर्ट इज फॉर गोल्ड. सो लुक्स लाइक अभी गोल्ड और ऊपर, अभी तक गोल्ड का रैली खत्म नहीं हुआ है. यहाँ पे जो फॉल आया था 29 दिसंबर को, सबको लगा था अब ये टॉप हो चुका है गोल्ड का, बट अगर यहाँ से एक लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, एंड आई थिंक फिर से अब गोल्ड में अक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया है. एंड आई थिंक अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद गोल्ड के प्राइसेस में और बढ़ोतरी देखने मिल सकती है. सिल्वर अगेन फ्रेश हाई. सिल्वर हैज हिट द $84.6 एन आउंस मार्क. इसका प्रीवियस हाई 83 था, अब हम ऑलमोस्ट 84 पहुंच चुके हैं. सो सिल्वर अगेन, कितना सारा न्यूज आया था सिल्वर के बारे में. इसका ETFs प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है, अब टॉप हो गया है सिल्वर, और कितना भागेगा. थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिला सिल्वर में, बट आई थिंक सिल्वर किसी की भी नहीं सुन रहा. आई थिंक सिल्वर इज ऑन इट्स ओन ट्रेजेक्टरी, इट्स मूविंग अप. इट हैज हिट अ फ्रेश हाई $84 एन आउंस. आई थिंक अभी और आई थिंक ये डॉलर को भी बीट कर देगा थोड़े दिन में, जो रेट से सिल्वर बढ़ रहा है. सो एज लॉन्ग एज इट इज अबव दी $74-75 एन आउंस मार्क, द ओवरऑल ट्रेजेक्टरी फॉर सिल्वर इज ऑल्सो लाइकली टू रिमेन पॉजिटिव. Now let me show you the budget.
Let me show you the FI data. अगर हम FII की बात करें, so FIs largely have been net sellers. If I have to show you the sheet, okay, let me open up the sheet here. So हमने देखा कि FIIs का जो मेजर ट्रेंड रहा है कैश मार्केट में वो बेरिश ही रहा है। फ्राइडे के सेशन में भी अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3,769 करोड़ का सेलिंग किया था उन्होंने। थर्सडे को भी लास्ट टाइम अराउंड 3,367 करोड़ का सेलिंग। तो पिछले हफ्ते अगर हम देखेंगे तो पूरा 5, 6, 7, 8, 9 for the last 5 days they were net sellers for the whole week, wherein they sold around 8,800 crores in the cash bucket. So clearly FIIs का जो सेंटिमेंट है कैश मार्केट में वो क्लियरली नेगेटिव है। और लॉन्ग शॉर्ट रेशियो हैज ड्रॉप्ड इवन फर्दर। बीच में एक इंप्रूवमेंट आया था 8% से हम ऑलमोस्ट 13% तक बढ़ चुके थे। अब फिर से हम 13% से 7.5% पर आ गए। दैट इज बिकॉज अगर आप देखोगे नेट इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स है उनमें शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हुआ है, जिसकी वजह से नेट कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम -1,28,000 has gone to -1,86,000. So there has been more short positions that has been built up in index futures, जिसके कारण लॉन्ग शॉर्ट रेशियो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गया 7.53% पर। दैट मीन्स हैवी बिल्डअप ऑफ शॉर्ट पोजीशंस है, सिर्फ 7.5% लॉन्ग पोजीशंस है और बाकी जितने भी पोजीशंस है रफली अराउंड 88, 87.5 उतना शॉर्ट पोजीशंस अभी भी बिल्डअप हुआ है। तो जब तक ये शॉर्ट पोजीशंस कवर नहीं होता एफआईएस की तरफ से तब तक शायद हम ऑल टाइम हाई भी पार ना करें, और जब तक हम ऑल टाइम हाई पार नहीं करते तब तक ऐसे ही मूवमेंट कैन बी रिलेटिवली चॉपी इन दी मार्केट्स हियर। नाउ इफ वी लुक एट निफ्टी, अगर हम निफ्टी की बात करें सो अगर आप देख सकते हो क्लियरली हम 100 डे ईएमए के नीचे आ गए थे। ये जो येलो लाइन आपको दिख रहा है दैट इज दी 100 डे ईएमए लाइन, एंड क्लियरली एक रिकवरी आया है फ्रॉम दी लोअर लेवल्स। एक हैमर टाइप ऑफ पैटर्न बना है विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आया है। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हम 100 डे ईएमए के काफी नीचे पहुंच गए थे। 100 डे ईएमए ऑलमोस्ट 619 के आसपास था, और निफ्टी का लो देखोगे दैट वाज 25,473, और वहां से अब निफ्टी रिकवर होके 25,700 पर आ गया। देन दैट मींस आई थिंक हाई चांसेस आर दैट निफ्टी ये जो 100 डे ईएमए उसको होल्ड करेगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट था बिकॉज अगर ये 100 डे ईएमए के नीचे अगर क्लोज होता, अभी भी ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स बाकी है, सेकेंड हाफ में अगेन हो सकता है शायद और एक राउंड ऑफ सेलिंग भी हमें देखने मिले। बट अगर ये 100 डे ईएमए के नीचे क्लोज होता तो हो सकता था शायद ये 200 डे ईएमए 25,130, 25,150 तक आ सकता था ये। बट द फैक्ट दैट आप देखो और थोड़ा काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग आया। अगर मैं आपको इंट्राडे चार्ट दिखाऊं, सो देयर हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी फ्रॉम द लोज, ऑलमोस्ट 25,473 से काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। और आई थिंक ये हो सकता है अगर हम 25,700 के ऊपर, ये प्रीवियस हाई भी था, आई थिंक मुझे लगता है जब तक हम 25,600 25,650 के ऊपर है तब तक आई थिंक इंट्राडे ट्रेंड ये कंटिन्यू हो सकता है। द पुल बैक कैन इवन कंटिन्यू ऑन द अपसाइड, and I feel we can move towards even 25,800 with the way Nifty is moving now. Clearly एक strong trend पकड़ा, आप देख सकते हो histogram bars भी rising है और RSI भी deeply almost 76 तक पहुंच गया 5 minutes chart पर, and DI plus has also given a crossover about DI minus. So I feel as long as Nifty holds about 25,600, the trend has definitely changed on an intraday basis. आप clearly अगर मैं एक downward sloping trend line breakout भी देखूं यहाँ पे, तो क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है, एंड एज लॉन्ग एज इट होल्ड्स अबाउट 25,600 द पुल बैक इज लाइकली टू कंटिन्यू। अगर फिर से हम 25,600 के नीचे आते हैं तो हो सकता है शायद फिर से जो सेलिंग है वो कंटिन्यू हो, बट एज लॉन्ग एज वी आर अबाउट द 25,600 buck, the Nifty is likely to move higher. I think it can move towards 25,850 in the short term. I think 25,850 probably should be the first target for Nifty on the upside. बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली एंड ऑफ द डे में ये देखना काफी इंपॉर्टेंट बच जाएगा कि निफ्टी ये 100 डे ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देता है कि नहीं। अभी फिलहाल 100 डे ईएमए के ऊपर है, दैट इज अ वेलकम साइड फॉर निफ्टी। क्लियरली दैट बाइंग इंटरेस्ट हैज एमर्ज्ड फ्रॉम द लोअर लेवल्स हियर। अगर हम सेंसेक्स की बात करें सो सेंसेक्स में भी आपको प्रीटी सिमिलर पैटर्न देखा जाएगा। सेंसेक्स अगर फ्राइडे के सेशन देखें तो ऑलमोस्ट 100 डे ईएमए के आसपास क्लोज हुआ था, और आज फिर से देखो एक स्ट्रॉन्ग हैमर पैटर्न बना है। अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद जब एक हैमर पैटर्न बनता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ रिवर्सल कैंडल, बट ये रिवर्सल तब कंफर्म होगा जब ये जो हैमर कैंडल का जो हाई है, हाई के ऊपर जब जाता है दैट इज व्हेन योर रिवर्सल गेट्स कंफर्म्ड। सो क्लियरली सेंसेक्स भी अपने 100 डे ईएमए के नीचे था। अगर हम 100 डे ईएमए देखेंगे दैट वाज अराउंड
83,580 83,600 मार्क आज का अगर हम लो देखेंगे तो 82,800 था और बाद से इवन सेंसेक्स में भी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है. सो आई फील आज का जो हाई 83,700 83,800 के ऊपर क्लोज होता है. तो अगर मैं 5 मिनट्स चार्ट देखो सो आई थिंक सेंसेक्स कैन मूव हायर. The first target is initially obviously 83,700 मार्क. अब ऑलमोस्ट वही मार्क के आसपास है. अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊं यहाँ पे by correcting these highs here. So I feel as long as Sensex stays above the 83,300, 83,350 mark, chances are that Sensex can keep moving higher. And I think, Sensex can move towards 84,200, 84,300 in the short term. All thanks to the announcement that came in very recently that India and US are going to have a call on the trade deal tomorrow. So that has kind of lifted off the sentiment in the markets. Even if you look at Bank Nifty, so Bank Nifty भी काफी I think ये जो almost 50-day EMA तक आ गया था, but अगर आप daily chart देखोगे तो exactly 50-day EMA जो कि ये जो blue line है that is your 50-day EMA line your, और वहां से ये एक strong buying interest नजर आया था. हम बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन के नीचे चले गए थे. बैंक निफ्टी ने 20-day EMA के नीचे क्लोज दिया था फ्राइडे को, बट ट्रेंड लाइन के ऊपर था. आज मॉर्निंग सेशन में ट्रेंड लाइन टूट गया था तो ऐसे लग रहा था शायद अब बैंक निफ्टी में जो ट्रेंड है वो शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा था. बट थैंकफुली बायर्स ने नीचे के लेवल से बाइंग करके वापस प्राइस को ऊपर पुश कर दिया है. एंड आई थिंक बैंक निफ्टी इज एट 59,500 नाउ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी स्ट्रॉन्ग. अगर आप देखोगे सपोर्ट लेवल पे जैसे ही एक कैंडल बनता है, एक रिवर्सल कैंडल बनना एट अ मेजर सपोर्ट इज एक्चुअली अ गुड साइन. So I think if Bank Nifty holds above 59,100, 59,200, high chances are that Bank Nifty में फिर से एक तेजी हमें देखने मिल सकता है. That can push Bank Nifty prices higher towards 60,000, 60,100 in the short term. So ये closing important होगा. I think 59,150, 59,200 के ऊपर हमें closing चाहिए. I think that is the level that the markets will be keenly looking at. इफ आई लुक एट द हीट मैप कहाँ पे आया है बाइंग. अगर आप सुबह सुबह अगर आप हीट मैप देखते थे तो आप शायद आपने ये देखा होगा कि सारे सेक्टर्स में एक नेगेटिव ट्रेंड ही छाया था. बट क्लियरली आईसीआईसीआई बैंक हैज रिलेटिवली इट्स द बेस्ट परफॉर्मिंग प्राइवेट बैंक्स. अगर आप देखोगे, आप किसी का भी चार्ट ले लो, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, वो सारे अगर अदर प्राइवेट बैंक्स है उनका चार्ट स्ट्रक्चर रिलेटिवली वीक लग रहा था कंपेयर टू आईसीआईसीआई. So ICICI is up around 1.3%. Strong buying SBI Life में भी आया है. Bajaj Finance is down. Bajaj Finserv is up. Coal India is doing well. हमने Coal India का चार्ट भी देखा था, अगर आपको याद है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला था, फिर से एक फॉलो थ्रू बाइंग आया. It's up around 3%. No support from Reliance. IT is also relatively mixed. IT भी अगर हम देखेंगे, barring Tech Mahindra, almost all the other stocks are mixed here. Auto is one sector that is down today. प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है ऑटो में. आइशर इज डाउन 1.5%, बजाज ऑटो इज डाउन 0.76, मारुति इज डाउन. एफएमसीजी आई थिंक यूजुअली हम देखते हैं मार्केट्स जब एक फियर के माहौल में रहता है, जब मार्केट्स में एक्स्ट्रा सेलिंग होता है, पीपल शिफ्ट टू डिफेंसिव्स. सो अगर आप देखोगे ऑल योर एफएमसीजी काउंटर्स वर डूइंग वेल टुडे. एशियन पेंट्स वाज अप अराउंड 2.3%. हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, that is up in the range of 0.4%. Metal again continues to move higher. Metal में बीच में एक 2-3 दिन में profit booking देखा था. But I think if you look at JSW Steel, that is up around 1.3%. Tata Steel is up 1.5%. Hindalco is up 1.5%. So clearly good momentum in the metal space. BL आज down है 0.8% नीचे. Bharti Airtel is also down. So barring ICICI Bank, Coal India एंड योर मेटल नेम्स, आई थिंक यहाँ पे मेटल नेम्स में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है. बट अगर रिलायंस, भारती एयरटेल और आईटी काउंटर्स अगर सपोर्ट करता है निफ्टी को सेकेंड हाफ पे, तो हो सकता है शायद हम हो सकता है आज ही हमें 24,800 देखने मिले, 25,800 देखने मिले निफ्टी में. बिकॉज अभी ऑलमोस्ट 25,715 के आसपास है. क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है. सो आई थिंक वी नीड सपोर्ट फ्रॉम दीज हेवीवेट्स. रिलायंस में अगर बाइंग आ गया तो डेफिनेटली निफ्टी कैन move up higher from the current levels here. Now talking about the key sectors to watch, clearly अगर हम देखेंगे पिछले 5 दिन से सारे sectors में एक weakness ही दिख रहा है हमें. Almost from, if you see from the 7th of Jan, almost all the sectors have been witnessing profit booking.
and the worst performing sector has been realty. Realty is down around 7% in the last 5 days. Tourism is down around 5% in the last 5 days. Auto is down around 4% in the last 5 days. Oil and gas is also one sector that is down roughly around 4% in the last 5 days. ऐसा सेक्टर है जो relatively कम गिरा है but relatively कम गिरा है, that is IT. IT is marginally positive 0.03%. डिफेंस में हमने देखा था all stocks like MTA Tech, Astra Microwave, BL, all these defense counters saw some traction in the last week. थोड़ा सा profit booking सारे defense counters में भी आए. But private bank has also fallen, but it has fallen relatively less compared to the other names here. So private banks, again, ICICI Bank is the strongest looking sector out there. Now we can also look at RRG as well. So let me open up RRG. अगर हम RRG की बात करें, so let us see which are the sectors that are showing good strength. So you can see a lot of sectors here. So let me remove some certain sectors. Let me remove Nifty next 50, mid cap 150, mid cap small 100, small cap 250. Let me remove this. Let me remove mid cap 50, 500, 200, 100. Let me remove micro cap. So clearly, if you see the sectors that are lagging behind, is your three sectors जो lagging quadrant में है. FMCG again भले आज के सेशन में पॉजिटिव है, बट ये देख सकते हो जो लाल में यहाँ पे FMCG, IT and infra. These are the sectors that are in the lagging quadrant here. So avoid these three sectors. हो सकता है ये तीन सेक्टर में आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने मिले. That is FMCG, IT and infra. जो सेक्टर ऑलमोस्ट लीडिंग से वीक हुआ है, दैट इज ऑयल एंड गैस. आप देख सकते हो ऑयल एंड गैस फ्रॉम द लीडिंग क्वाड्रेंट हैज मूव टू द वीकनिंग एंड इज नाउ मूविंग टू द लैगिंग क्वाड्रेंट हियर. सो अवॉइड ऑयल एंड गैस एज वेल. Improving में again you can see healthcare index that is showing some improvement. Healthcare from lagging has moved to improving and हो सकता है शायद वो लीडिंग क्वाड्रेंट में भी आए. जैसे हमने लास्ट वीक देखा था फार्मा काउंटर्स, फार्मा हेल्थकेयर स्पेस में थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट आते हुए नजर आ रहा है. But I think a lot of sectors are in the leading category now. So clearly अगर हम देखेंगे metal avoid करना भले वो leading में, because the line is pointing downwards. You should look for the lines that are pointing upwards in the leading quadrant. So clearly अगर मैं बताऊँ PSU बैंक, अगर आप देख सकते हो PSU बैंक एक long tail आपको नजर आ रहा है. It's in the rising mode. So PSU is the strongest looking sector, followed by consumer durables. Consumer durables भी एक strong uptrend में है. बाकी अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर हम देखेंगे इवन प्राइवेट बैंक्स में भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है यहाँ पे. निफ्टी बैंक, सो बोथ PSU एंड प्राइवेट बैंक्स आर डूइंग वेल अलोंग विथ I would say Nifty Pharma. Pharma is also from lagging, has moved to the leading quadrant here. Even healthcare is in the improving quadrant here. So I feel अगर मैं दो सेक्टर्स की बात, तीन सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं चार सेक्टर्स देखूं तो आई थिंक इट्स योर फाइनेंशियल सर्विसेज, PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स एंड निफ्टी फार्मा. These are your four strong looking sectors, and weak sectors में it's your IT, infra and FMCG. So अगर आपको strongest looking sectors देखना है तो it's your PSUs, private banks, Nifty Pharma and Nifty Healthcare. Barring that, again, भले बाकी even consumer durables, you can even look at consumer durables. These are five strongest looking sectors currently based on the relative rotational graph, whereas almost IT, FMCG and infra are in the downward category. Now talking about the key stocks to watch, that is our last segment. कौन से stocks है जो ऐसे market में भी एक strong price action structure दिख रहा है. One is Coal India. Coal India, if you remember, ये breakout पे हमने identify किया था. एक downward sloping breakout आया था, फिर थोड़ा सा profit booking आया था, and एक strong follow through movement आया था Coal India में, फिर again consolidation में चला गया था, and again there is a strong follow through seen today. And as long as Coal India 410 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, the overall trend is likely to be bullish in Coal India here. Apart from that, महाराष्ट्र बैंक जैसे हमने देखा था, PSU स्पेस जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है. सो महाराष्ट्र बैंक में मॉर्निंग के सेशन में काफी अच्छा ट्रेड था, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, अब रीटेस्ट हुआ है. तो जब तक ये 61.5, 62 लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सो इवन बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो लाइकली टू रिमेन पॉजिटिव. Apart from that, Ather Industries, so if you are confused between Ola and Ather, purely two-wheeler electric vehicle category segment ही देख रहे हो, so between the two I think clearly it's Ather Industries here.
अगर हम एथर देखें, सो एथर हैज गिवन अ ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, एंड आज एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट भी नजर आ रहा है एथर में. सो एज लॉन्ग एज एथर स्टेज अबाउट 935 940 मार्क, the trend is likely to be positive for ether as well. Apart from that, Asian paints, so Asian paints में जैसे मैंने बताया, जब markets usually जब weak होता है, people usually prefer defensives, but again अगर देखोगे Asian paints was largely moving in this range here, almost from 10 December until 9th of Jan, almost for a month. Asian paints was moving in that 2850 2725 range, and today seems like Asian paint is giving a breakout. It's at around 2890, and RSI has also moved above the 60 mark. DI plus has crossed over DI minus in the ADX indicator. So high chances are that Asian paints can move towards 2930 2950 in the short term. So even Asian paints chart structure looks positive. Apart from that, like I said, ICICI Bank, private banks भी एक leading quadrant में RRG का, हमने प्राइवेट PSUs में महाराष्ट्र बैंक देखा था, प्राइवेट बैंक्स में ICICI बैंक. अगर हम ICICI बैंक्स देखें, सो ICICI बैंक एक ब्रेकआउट देके एक स्ट्रॉन्ग रीटेस्ट किया है, ऑलमोस्ट 1390 से रीटेस्ट लेके अगेन इट हैज गॉन टू 1420. सो हाई ऐसे लग रहा है, लुकिंग एट द चार्ट स्ट्रक्चर फील्स लाइक ICICI बैंक द इमीडिएट रेजिस्टेंस इज एट 1440, बट अगर 1440 को भी ब्रेक कर देता है तो हो सकता है दैट इट कैन मूव हायर, एंड प्रॉब्ली इट माइट इवन टेस्ट 1480 1500 लेवल्स इन द शॉर्ट टर्म. So these are 5 sectors that are relatively looking strong, but then there are also a couple of sectors that are relatively looking weak. One is if you look at Cummins India, guys. So Cummins again, clearly on the daily chart, आप देख सकते हो price has made a higher high and the RSI has made a lower high here, and clearly there was a trend line breakdown in Cummins here. So I think यही मैं सचिन जी का setup देख रहा था यहाँ पे. Praveen, yeah, Ether, sorry, that is Ether, correct, sorry, my bad. Thanks for correcting me. So अगर हम Cummins India देखें, so between Cummins India, so Cummins India has given a trend line breakdown on the daily chart with RSI divergence as well. And so the chart structure looks weak in Cummins India. The 200 EMA around 3860, 3870. That's a strong support for Cummins India here. But I think if we go below 3870, हो सकता है शायद Cummins India में और pressure आए. बट फॉर Cummins India आप देखोगे एक ब्रेकडाउन के बाद कंसोलिडेट करके एक स्ट्रॉन्ग एक फॉलो थ्रू मिला था डाउन साइड पर. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर Cummins टू होल्ड अबाउट 3870 3880. as long as it holds above this zone, I think we can expect some reversals. I think below this zone maybe we can see some more pressure here. Apart from that, even Larsen and Toubro अगर आप देखोगे, again there is the price has made a higher high, and at the same time आप देख सकते हो RSI has made a lower high here. So clearly there is a divergence, and अगर हम Larsen and Toubro भी देखेंगे, there is a trend line breakdown as well. So the next support is around 3900, but for Larsen and Toubro to move higher, again it should go above the 4050 4060 mark. I think if it goes above that zone, then हो सकता है शायद थोड़ा recovery हमें देखने मिले on the upside. But till the time it is below the 4050 4060 zone, the overall trend is likely to remain down. And the last stock, even delivery, अगर हम delivery देखोगे, that has given a major support breakdown on the daily chart today. So around 395 390 395 was a strong support here. बट आज हमने देखा कि मॉर्निंग के सेशन में भले ही लोअर लेवल से एक छोटा रिकवरी आया है, but I think it needs to hold about 395. If it fails to hold about 395, then chances are that even delivery can move down. So the overall chart structure looks negative for delivery as well. Sachin ji is asking for Maruti. Okay, so that's a wrap of today's mid-market session. I hope it was informative. So we've covered right from the global markets to macro indicators to FII positioning to the index levels, index outlook with sectors with the help of RRG and the stocks that are looking positive on their daily charts here. So now let us start off with our question and answer session. If you have any queries, any doubts, do let me know in the chat box. So we'll look at Maruti first. So Maruti again, ideally I feel we can maybe draw a trend line like this.
अभी भी वो ट्रेंड लाइन के नीचे ही है. आई फील दिस इज 16,600, 1650, 650 is a strong resistance. As long as it trades below that, I think the trend is likely to remain sideways to negative. Sale on weekly chart. Yeah, positive. I think it's good. I think अगर देखोगे previous high 140, 145. I think as long as it holds above 140, the overall trend is likely to be positive for sale, guys. IREDA. Okay. Avoid IREDA. I think till the time IREDA 150 के ऊपर जब तक ये नहीं जाता, it's better to avoid, because see from the lower levels we have got a pullback और वहां से एक करेक्शन आया. आई थिंक सेकेंड टिक इफ इट गोज अबाउ 150, देन चांसेस आर दैट इट कैन काइंड ऑफ मूव अप हायर. 150 के ऊपर आई फील वी कैन एक्सपेक्ट IREDA टू कंटिन्यू अपवर्ड. एंजल वन आई कांट कमेंट ऑन दैट श्रीकांत जी, बिकॉज अगेन कंपटीशन में, बट फिलहाल के लिए अवॉइड बिकॉज द ओवरऑल ट्रेजेक्टरी इज डाउन. I feel as long as it stays below 2,500, the overall trend is likely to be bearish. Selvam ji is asking for silver bees. I think मैं पता नहीं चल रहा है आपको silver bees के लिए क्या करूँ. Because I think I'm 50-50 in silver bees here because it's already gone up. So clearly मुझे ये levels पे buy करने definitely थोड़ा uncomfortable feel हो ही रहा है. See, unless if you are doing SIPs for long term every month, if you are putting money in silver bees or gold bees or even Nifty bees, then that's a different thing altogether. But if you are quickly looking for a short term, then I would say avoid silver. I know thoda fear of missing out ho raha hai, but I think wait for a correction because silver has already run up a lot. So कहीं ना कहीं तो गिरेगा, कभी ना कभी तो गिरेगा. I think wait for that fall, wait for that healthy correction before it starts moving up again. रिलायंस अवॉइड करना प्रमोद जी. आई थिंक ट्रेंड इसका नेगेटिव है. आई थिंक इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1440, 1450. If it breaks below that, then chances are that it can go down even further. Can I take a C position in Nifty 50? See, it's gone now. अभी थोड़ा consolidate कर रहा है. Maybe if we get another move above, let's say 25,740, 25,750, probably then you can maybe take a chance with around 25,650 or 25,680 as a support. अभी ये देखो, एक जैसे पता है डाउन ट्रेंड के बाद फर्स्ट पुल बैक, वेट फॉर अ करेक्शन, एंड ये हाई के बाद अभी देखो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है. Maybe if it goes about 25,750, wait until 25,750 is what I would say. Archana ji is asking for Misho. Misho, very difficult to say. See, if you are holding, maybe you can hold until 155. If it goes below 155, then it's better to avoid Misho here. I think it's almost kind of given up the gains here. I think you can hold with 155. Below 155, it's better to exit. Acme Solar also. Maybe you can hold with around 207, 210 SNSL for Acme Solar. सुमित जी देखो मैंने आपका नाम टाइप कर दिया. So if you look at Tech Mahindra, like I said, 1650 के ऊपर थोड़ा IT में थोड़ा सा मोमेंटम नहीं है फिलहाल, but I think above 1650, chances are that it can kind of move high. HDFC Bank अभी avoid करना. I think you have a better option in ICICI Bank currently. Chandrasekhar ji, HDFC is at 935 now. I think below 935, chances are that it can go down even further. So avoid HDFC, I would say. How much power is left in silver? I really don't know. I think very difficult to answer. But I think अगर आपके है, ride the trend till it lasts. अगर आपको थोड़ा सा हल्का करना है, आप हल्का कर सकते हो प्रवीण जी. अभी सिल्वर में, गोल्ड में, इवन इन गोल्ड बीज, इफ यू सी गोल्ड बीज, see, I still wouldn't advise you to buy at the current levels. अगर देखो gold is at around 116 now. Maybe 110 is where the support is for gold bees. चार्ट देखे तो ऐसा लग रहा है शायद और अप मूव कंटिन्यू हो, बट दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि ऑलरेडी गोल्ड बीज, सिल्वर बीज इतना बढ़ गया है, तो हो सकता है अब आप एंटर करें और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आए.
So इतना high conviction लग नहीं रहा है in gold and silver, though the overall trend is positive है. It's like आपको कोई चीज पसंद है, आपको चीज खरीदना है, बट आप देख रहे हो उसका प्राइस सिग्निफिकेंटली हाई है, आपको चाहिए भी है, बट आपको एक दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि मैं ज्यादा प्राइस दे रहा हूँ इसके लिए. सो इट्स इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इन गोल्ड एंड सिल्वर करंटली. सो आई वुड से वेट इट आउट, थोड़ा और वेट कर लेना, बिकॉज ऑलरेडी सी गोल्ड एंड सिल्वर एज रन अप अ लॉट. कब आएगा प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज अभी इक्विटी मार्केट्स थोड़ा काफी टाइम के लिए चॉपी है, बट अब जब इक्विटी मार्केट्स भागना शुरू करेगा, आप देखोगे स्मॉल कैप इज लैगिंग, मिड कैप इज लैगिंग, निफ्टी इज ऑल्सो एक सेलेक्ट हैवीवेट्स के थ्रू हम एक ऑल टाइम हाई पहुंच गए हैं. ऐसा नहीं कि एक ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन देखने मिल रहा है. एफआईआईज का भी अगर हम देखेंगे सेंटिमेंट बेरिश है. जब एफआईआईज आ जाएंगे, इक्विटी मार्केट्स ऊपर चलने लगेगा ना, दैट इज व्हेन गोल्ड एंड सिल्वर विल स्टार्ट सीइंग प्रॉफिट बुकिंग. सो जब तक वो चॉपीनेस है तब तक मे बी हो सकता है गोल्ड एंड सिल्वर कैन गो अप, बट वंस equity starts firing, then chances are that gold and silver can kind of go down. Bank of Baroda is good. Like I said, PSU space is doing well. Bank of Baroda, acha, I think as long as it holds above 290, 292, the overall trend is likely to be positive. RSI डाइवर्जेंस है गोल्ड में, बट उसके साथ हमें RSI डाइवर्जेंस के साथ ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी हमें देखना चाहिए. सो लाइक आई सेड, ये RSI डाइवर्जेंस करेक्ट है, बट ये जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे जब ब्रेक होगा तब जाके हम बोल सकते हैं शायद एक रिवर्सल आ सकता है यहाँ पे. बट जब तक वो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन नहीं होता है, जस्ट लुकिंग एट RSI डाइवर्जेंस थोड़ा सा रिस्की हो सकता है. सिल्वर एंड एल्यूमिनियम विल कंटिन्यू टू रैली. सी ऑल द कमोडिटीज आर डूइंग वेल एक्सेप्ट क्रूड ऑयल, बट आई थिंक क्रूड ऑयल भी धीरे धीरे अब हो सकता है शायद मे बी वो भी ऊपर की तरफ जाए. MOL, it's make money, right? MOL is make money organics, if I'm not wrong. MOL avoid, I think wait till it goes above 66. I think it's better to avoid bottom fishing now. Maybe if it goes above 66, probably that could be a good level for MOL. So barring a handful of export-oriented sectors, it's US consumers who need to be worried over high tariff. This aspect has been overdone for pure play domestic, and yeah, I mean that's there. We'll have to see what first of all वो डील कैसे होगा वो देखना पड़ेगा इंडिया यूएस के बाद. Secondly, we have to see whether that deal is constructive, because I'm sure the tariffs is going to be there. From 50%, how down do we go? Do we go to 10%, 15%, 20%? And what is the US stance on us buying Russian oil? That is also something that needs to be looked at. Whether we are going to continue buying from Russia. If we stop, then whether the dynamics will Russia change, or if we buy from US and if the oil prices go up, because US will probably invoice it in dollars. So if dollars goes up, that will have a significant strain on our foreign exchange reserves as well. So is US going to dictate terms to us? Are we going to go below them, or we are going to still buy Russian oil? And what is our stance going to be with China? So we saw recently what happened with BHEL. We are allowing Chinese firms to participate in our contract. So are we going to keep China happy? So all these things are into play, guys. I think there are a lot of geopolitical. I think it's time for our external affairs minister, to be very active, because definitely I think we are in that time where there is pressure. There is domestic pressure as well. Plus, I know people are expecting a good budget. People are expecting corporate earnings to also show up. So domestically also there is challenge, but there is also challenge from the outside as well. We also want a good deal with US. We want oil, because since I think India के पास सब कुछ है, but अगर oil भी रहता ना, I think nobody would have even dared to probably dictate terms to us. It's just that India doesn't have oil. I think oil होता तो शायद ये जो foreign exchange reserves का जो था ना, शायद वो problem होता ही नहीं. Just that we are dependent on oil for other countries here. KPR mills. See, avoid KPR mill. See, it's in a downtrend. Avoid averaging now. I think its next support is around 760.
I think if it goes below 760, then I think chances are that it can go down even further. So avoid averaging in KPR Industries now. ये सब करके ट्रम्प को नोबेल पीस चाहिए. I think he just keeps saying that he's the one that is responsible for stopping the wars. We don't really know, what he's up to. But it looks like after Venezuela is now targeting Cuba, and I think he's on the verge of acquiring Greenland as well. Obviously, see, you can't even blame Trump, because just like how we are concerned about our economy and we want India to grow, I think Trump wants US to grow. So he will probably work in the best interest of US and not in the best interest of India. India को लेके चलेंगे, साथ लेके चलेंगे, but obviously he'll be, looking at what's best for US here. Even if that comes at a cost of अगर किसी के साथ फ्रेंडशिप तोड़ना भी पड़े at the cost of ensuring that US economy grows, then probably he'll be in a position to do that. I mean, you can't really blame Trump totally. Oil मिलेगा अंडमान में. Tejas network, avoid Tejas network. It's in a deep downtrend. Avoid Tejas networks. Clearly avoid. Wait for some reversal sign, Shrikant ji. जब तक नहीं मिलता है तब तक it's Vinay ji saying we do have some oil reserves in and around Andaman and Nicobar, but extracting it is difficult. Yeah, that's there. NMDC again. As long as it stays above 78, I feel it can be positive. I think below 78, we can go down. NCL Industries. I think NCL wait for breakout about 213, 215. I think once we get a breakout about that, chances are that it is likely to remain positive. अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करना है एनसीएल. वेट फॉर 215 ऑन द अपसाइड. डिक्सन भी अवॉइड करना है, डाउन ट्रेंड में ही है. आई थिंक नो रिवर्सल साइंस. आई थिंक इमीडिएट रेजिस्टेंस इज अराउंड 12380, 12390. इसके ऊपर अगर जाता है देन मे बी हो सकता है थोड़ा पुल बैक आए ऊपर की तरफ. बट जब तक हम 12300, 12350 के नीचे, the trend is likely to remain negative. Clear, guys. Also, guys, my colleague Gautam is doing a webinar today at 4 o'clock. I think it's going to be an informative session. To attend that. And tomorrow we'll be having discussing put ratio back spreads. So last week we discussed call ratio back spreads. Tomorrow at 4 o'clock we are going to look at put ratio back spreads as well. Okay, I'll just take one last talk. IREDA. IREDA, like I said, Praveen ji, wait for a breakout above 150, 151. जब तक हम 150, 151 के नीचे है तब तक it's better to avoid. Okay, so that's a wrap of today's session, guys. I hope it was informative. Again, like I keep saying, if you find these sessions informative, do share it with your friends, families, and relatives so that they can also join the mid-market session and take benefit of the same. Until then, bye, guys. Take care, stay safe, and I'll see you tomorrow for the new mid-market session. Bye, guys, and take care.